Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing well. Welcome to another session. आज हम करेंगे electrolysis और इंशाल्लाह we will make sure कि आपके कोई भी electrolysis का कोई issues हैं तो वो आज इंशाल्लाह resolve हो जाएंगे. I'm sorry I couldn't keep the sessions over the weekend. There was a family emergency so I had to go out of city. लेकिन अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हैं कुछ भी पूछना है feel free to WhatsApp और let's get started. This is for O levels and IGCSE. ठीक है, and both there are questions from both of O levels and IGCSE past or present here. So ये worksheet जब हम कर लेंगे तो इंशाल्लाह we will understand electrolysis to the fullest extent as far as O levels and IGCSE are concerned. Alright, so let's get started. Zinc oxide is reactive with sulfuric acid to form zinc sulfate. Construct the equation. Now this is not electrolysis, but this is redox reaction. And redox reactions are also electrochemistry के अंदर ही आते हैं वो दोनों, क्योंकि उनमें electrons का transfer ही हो रहा होता है. So we have zinc oxide reacting with sulfuric acid. अच्छा wait a minute, ये तो आयनिक, ये तो हमारे पास सीधा सीधा acid based reaction हो रहा है, H2O plus zinc sulfate. So this is not redox, this is simple acid based reaction. अच्छा आगे चलते हैं. Pure zinc is made by the electrolysis of aqueous zinc sulfate. ठीक है, so aqueous है, zinc sulfate हमारा electrolyte है. Zinc forms at the negative electrode, of course, that's the cathode, and hydroxide ions react at the positive electrode. So they have simplified it for us what ions are going to go. So construct the equation for the reaction at both electrodes. So zinc is going to go to the negative electrode, that is this one. So zinc ions go there and they make zinc metal. To do that, obviously look at the charges. This is positive 2, this is 0. तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे ना, so it will need 2 electrons and that's how it got to becoming zinc. Similarly this one, hydroxide is going to go there. Now hydroxide's equation I would suggest आप लोग याद कर लें. So 4 hydroxide ions make 1 oxygen, 2 water, 4 electrons. ठीक है, so 1, 2 and 4. मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है that 1, 2 and 4. Of course you can always make the equation up, but it's not really required. करना बहुत आसान है अगर आपने इसको याद नहीं करना है, which is fine. So just remember that OH you need 4 of them, and this is one easy way of remembering what will be made. So these are the 3 main products, and of course they all have negative charges. So yeah, hello Abdullah, it was good seeing you today. Yeah. Zinc is used to galvanize iron. Galvanizing is a technique that we use. Basically हमारे पास जब भी कोई metal होता है which we want to safeguard, हम नहीं चाहते कि उसका reaction हो, हम उसको safeguard करना चाहते हैं. गाड़ी की body है for example, ये कोई भी है ऐसी चीज़ है, we want to safeguard it. तो हमारे पास उसको save करने के 3 तरीके हैं. First method is कि हम उसका alloy बना लें. ठीक है, alloy बना लोगे, for example stainless steel बना लेते हैं, so वो फिर react नहीं करेगा and it will be safeguarded. सेकेंड ऑप्शन इज वी यूज अ बैरियर. अब वो बैरियर क्या हो सकता है, वो बैरियर हो सकता है पेंट, दैट बैरियर कैन बी ग्रीस, कोई लुब्रिकेंट ऐड कर देंगे. दैट बैरियर कैन बी जिंक, तो उसको जिंक की एक लेयर लगा देंगे, उसको हम कहते हैं गैल्वनाइजिंग. ठीक है, दैट बैरियर कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ठीक है, उससे वो खूबसूरत भी लगेगा और उसका रिएक्शन भी नहीं होगा. एंड लास्टली अगर ये बैरियर मेथड आपने नहीं करना तो देन यू कैन डू सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन वेयर अ मेटल विल सैक्रिफाइस इट्स ओन लाइफ टू सेव व्हाटएवर यू आर लुकिंग फॉर. ठीक है, सो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. तो यूजुअली सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में वी इंश्योर दैट जो भी आप मेटल यूज कर रहे हो इज मोर रिएक्टिव देन व्हाट यू आर ट्राइंग टू सेफ गार्ड. सो अगर आयरन को सेफ गार्ड करना है तो जिंक का उसके साथ एक लेयर लगा देंगे. सो दैट इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. तो हमारे पास ये तीनों मेथड्स हैं जिससे हम वो कर सकते हैं. एक मेटल है जिसके ऊपर नेचुरली ऐसा होता है एंड दैट्स एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम के ऊपर नेचुरली एक ऑक्साइड की लेयर होती है, सो यू डोंट नीड टू लाइक डू इट सेपरेटली. एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है. अब वो होता क्या है, बेसिकली एक लेयर है, ये एल्यूमिनियम है, इसके बाहर ऐसे एक लेयर लग गई है. अब लेट सपोज ऑक्सीजन है और उसने इसके साथ रिएक्ट करना है, तो ऑक्सीजन नीचे एल्यूमिनियम तक पहुंच ही नहीं पाएगा बिकॉज दिस बैरियर will actually just stop it, and when it stops it, it wouldn't be able to reach back to it. Alright, so that's the thing. Alright, zinc is used to galvanize iron to prevent this reaction. So let's see, explain how zinc galvanizing protects it.
So the idea is really simple. When you galvanize it, it forms a barrier. There is a non-porous layer. एक barrier उसके ऊपर बन गया है, protective barrier है. और उससे क्या होगा कि रस्टिंग में आपको क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, and they react. So it forms a barrier. So water and oxygen cannot collide, react, reach iron. ठीक है? And you can also say that zinc, being more reactive, reacts first. ठीक है? अब reacts first का यहाँ पे मतलब क्या है? That it transfers electrons. क्योंकि electrons के through reaction होना है ना, तो reacts first and gives electrons to oxygen, तो उसकी वजह से वो आयरन को कुछ भी नहीं होता. ठीक है? So that's what happens. Alright. Okay. Zinc reacts with aqueous nickel 2 nitrate. As you can see, zinc is displacing nickel. Displacement principle is at the heart of this chapter. Displacement principle क्या कहता है हमें? Displacement principle says कि अगर आपने कभी भी किसी इक्वेशन में आयन देखा ना, किसी फॉर्मूला के अंदर कोई चीज़ है तो वो आयन ही हुआ ना, और ये अकेला अगर बैठा हुआ है तो that is just the metal itself. So it simply says that a more reactive atom can displace a less reactive ion. Okay, that's what this displacement principle is. So यहाँ पे this is less reactive ion and this is more reactive atom. It can easily displace it, and that's what we will see. Okay. Yeah. Yes, you're right. Zinc is more reactive. So yes, you can talk about preferential discharge. यहाँ पर हम preferential discharge की बात कर सकते हैं definitely. लेकिन ये discharge नहीं है. It is basically the idea that it will lose electrons first. Okay. Zinc is not less reactive than iron. Zinc is more reactive. तो zinc जो है वो electrons lose करता है, iron नहीं करता है in this situation. Okay. Draw a label diagram to show how a fork made of nickel is electroplated with silver. Again, जब आपने electroplating करनी है तो क्या करना है? You have to get जिस चीज़ की plating करनी है ना उसको dissolve करना है, तो वो anode होगा. ठीक है? So that's the idea. So I will take this solution. This solution could be, मैंने सिल्वर की प्लेटिंग अगर करनी है तो सिल्वर का कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं. अगर सिल्वर का आपने यूज़ नहीं करना है, यू कैन यूज़ सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव कोई भी कॉपर सल्फेट यूज़ कर सकते हैं, बट यूजली सिल्वर वुड बी अ बेटर चॉइस. सो वी कैन से दैट आई हैव सिल्वर नाइट्रेट, आई गेस सिल्वर नाइट्रेट एक्वस. अच्छा, अगर आपको सॉल्ट नहीं ना याद, आप सिंपली लिख दो इलेक्ट्रोलाइट. अगर वो भी नहीं लिखना, सिल्वर आयन लिख दो, लेकिन आपने लेबल ज़रूर करना है, खाली डायग्राम नहीं छोड़नी है. अब यहाँ पर हमने ये कर दिया, ये मेरा फोर्क है, ठीक है, ये प्योर सिल्वर है, बिकॉज दिस इज द वन आई एम गोइंग टू प्लेट ऑन दिस. जस्ट मेक श्योर कि जो फोर्क है इसको नेगेटिव चार्ज मिलना चाहिए और प्योर सिल्वर को पॉजिटिव चार्ज मिलना चाहिए. ये पॉजिटिव और नेगेटिव की डिस्टिंक्शन यू शुड बी क्लियर विद इट, दैट पॉजिटिव इज द लार्जर वन एंड नेगेटिव इज द स्मॉलर वन. ओके. Silver sulfate could be used, but not silver sulfate itself. Always mention the state symbol. So this is aqueous. It has to be soluble in water or it has to be liquefied. Liquefy करने का हमें नुकसान होगा because it will take a lot of energy. So हम soluble salt ले लेंगे. Alright? And you can just say that it is electrolyte. Worst case scenario. आपको नहीं याद आ रहा ना कोई solubility salt. Soluble salt, तो उसको आपने electrolyte लिख देना. Never leave a diagram without labels. Please, always label the diagram. Okay. So pure silver would be the anode because it will dissolve. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको गौर से सुना. Everybody, pay attention. There are two rules to electrolysis. If you understand those two rules, you understand electrolysis. First rule. और ये फर्स्ट रूल इसलिए क्योंकि ये पहले अप्लाई होता है, सेकेंड रूल बाद में अप्लाई होता है. सो इट हैज़ टू बी इन ऑर्डर. फर्स्ट रूल इज रिएक्टिव एनोड डिसॉल्व्स टू फॉर्म आयंस. अब रिएक्टिव एनोड में दो ही हैं जो नहीं होते, दैट इज ग्रेफाइट
वो रिएक्टिव नहीं होता, प्लैटिनम दैट्स नॉट रिएक्टिव. रिएक्टिव में बाकी सब आ जाएंगे. सो इफ यू हैव ग्रेफाइट एंड यू हैव प्लैटिनम, leave that out, but every other one will follow this rule. Anode will dissolve and form ions. Sure, cathode भी dissolve करता है, हमारे सिलेबस में नहीं, so we don't care. हमारे सिलेबस में इस वक्त सिर्फ एनोड है. तो अभी हमारा फोकस जो है वो एग्जाम की प्रेपरेशन है. केमिस्ट्री सीखेंगे और हम सीख भी रहे हैं, बट राइट नाउ आवर मेन फोकस इज एग्जाम प्रेप. सो रिएक्टिव एनोड इज द वन दैट वी आर लुकिंग फॉर. सेकंड, एंड दिस विल अप्लाई आफ्टर द फर्स्ट रूल. सो आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, आपने पहले फर्स्ट रूल अप्लाई करना है, फिर सेकंड रूल अप्लाई करना है. सेकंड रूल क्या है? लेस रिएक्टिव आयन विल डिस्चार्ज except concentrated halide. Concentrated halide का मतलब है कि आपके पास हेलोजन आयन है, ग्रुप 7 से है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है. ठीक है. सो अब इसका मतलब है आपके पास अगर मल्टीपल आयन्स हैं, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज रूल कहते हैं इसको. इफ यू हैव मल्टीपल आयन्स, लुक फॉर द वन दैट इज लेस रिएक्टिव, दैट विल डिस्चार्ज. नाउ ऑफ कोर्स द आइडिया बिहाइंड इट कि ऐसा क्यों होता है, द आइडिया इज रियली सिंपल. एटम्स वांट टू स्टे एज आयन्स. They don't want to go back to becoming atoms. So through electrolysis, you're forcing them to go back. Metal ने oxidize हुआ, आप उसे कह रहे हो reduce कर. Non-metal ने reduce किया, आप उसे कह रहे हो electron वापस दो, go back to becoming atom. They don't want to do that. They're more stable being ions. So the ones that are less reactive, आप उनको easily force कर सकते हो. They take less energy to go back. जो ज़्यादा reactive हैं, they take more energy to go back. So इस वजह से ये होता है. अब सारा कुछ सेकंड रूल को अगर आपने सिर्फ ओ लेवल्स और IGCSE एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना है, तो दो केसेस हैं. इफ यू हैव डाइल्यूट सॉल्यूशन, देन यू विल सी कि आपके पास हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज होगा. एंड दिस इज अगेन फॉर एनोड. कैथोड का बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेस रिएक्टिव डिस्चार्ज होगा. अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसमें अगर क्लोराइड है तो क्लोराइड डिस्चार्ज होगा. दैट्स इट. दो ही केसेस आते हैं आपके एग्जाम में, तीसरा कोई केस ही नहीं आता. सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, जो भी है, सल्फेट ने डिस्चार्ज नहीं होना, नाइट्रेट ने आपके सिलेबस में डिस्चार्ज नहीं होना. वो आते भी डाइल्यूटेड हैं, कॉन्सेंट्रेटेड आते ही नहीं है. आपके सिलेबस में कॉन्सेंट्रेटेड सिर्फ HCl आएगा, या सोडियम क्लोराइड आएगा, या कोई भी क्लोराइड ब्रोमाइड आयन आएगा. एंड इन दैट यू जस्ट हैव टू नो दैट दैट इज द वन दैट्स गोइंग टू डिस्चार्ज. ऑफ कोर्स इसके पीछे काफ़ी साइंस है, एंड नर्स्ट इक्वेशन एक होती है, A2 में पढ़ते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई होती है कि क्यों ऐसा होता है. बट राइट नाउ वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. ओके. आपको मैक्सिमम क्लोराइड या ब्रोमाइड आएंगे कॉन्सेंट्रेटेड में, और कभी कोई आया ही नहीं है. सही है. सो दीज आर द टू मेन रूल्स. इलेक्ट्रोलिसिस इन दोनों से कंप्लीट आपका हर क्वेश्चन सॉल्व होता है. ओके. Let's do it. Alright. Aqueous ammonia is added with mixing. अच्छा, यहाँ पे ये तो बना लिया था. Containing zinc ions until no further change occurs. What observation could be made during this test? ये तो zinc ions का टेस्ट है, तो ये अभी के लिए मैं skip कर रहा हूँ because this is about ion analysis. Blocks of zinc are attached to the underside of ships made of iron to stop them from rusting. क्यों होता है ऐसे? बिकॉज शिप की बॉडी के साथ आयरन से बनी हुई है, ऑक्सीजन डिजॉल्व है सी वाटर में, एंड यू हैव वाटर, तो रस्ट होने के लिए तो परफेक्ट प्लेस है. सो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. ठीक है. तो अब क्या होगा, जिंक क्या करेगा अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो व्हाट विल इट डू. यहाँ पर उसने एक लेयर नहीं बनाई है, उसने सिर्फ ब्लॉक ऑफ जिंक जो है वो उसके साथ अटैच किए हैं. ठीक है. सो इट रिएक्ट्स फर्स्ट इंस्टेड ऑफ आयरन, एंड दैट्स इट. सिंपल. बाय द वे, समटाइम्स क्वेश्चंस, कभी भी ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम में नहीं आया, बट स्टूडेंट समटाइम्स आस्क के, लेट्स सपोज ये एक शिप है और इसकी बॉटम पे हमने 2 लगा दिए, तो इनके मिडल वाला जो स्पेस है वहाँ पे भी तो रिएक्शन हो सकता है. सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, रिएक्शन हो सकता है. बट रिएक्शन कैसे होता है आयरन का? The reaction is iron loses electron and so does zinc. तो यहाँ पे you have surface of metal, electrons can flow.
तो अगर यहाँ से आयरन इलेक्ट्रॉन देता है ना तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन उसको पकड़ा देता है और उसकी जगह जिंक रिएक्ट कर जाता है. सो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के लिए उनको साथ साथ जुड़े होना ज़रूरी नहीं है. एज लॉन्ग एज दे आर कनेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो ऑन द सर्फेस. मेटालिक बॉन्डिंग में आपने पढ़ा हुआ है दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव अराउंड. सो अगर आयरन अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है तो वहीं पे जिंक दे देता है और आयरन को नहीं रिएक्ट करने देता, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव. सो इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक दैट. ओके. Now, do not use the word rusting for zinc. Rusting is a word exclusively for iron. We will use the word corrode. Okay? Only aluminum has a layer of oxide that you should know about, that you should ask about. बहुत से और metals के ऊपर होती है, but we don't need to worry about it. Alright, pure copper can be made by electrolysis of aqueous copper to sulfate. So this is your electrolyte, copper to sulfate. Okay, so draw a diagram. So this is the tank. You have aqueous copper sulfate. Okay, always label it. Use one pure copper electrode and one impure copper electrode. Remember, हमने copper कहाँ से dissolve करवाना है? Impure से ना. So that should be anode. Remember, reactive anode will form ions. So reactive anode होगा तो purify होगा ना. So this one is impure copper. And then I have a pure copper. Pure copper. Okay. Again, impure copper should have a positive charge, pure copper should have a negative charge, and that's it. What will happen is that first rule will apply. This will dissolve. It will go in there. And over here, यहाँ से ions वापस इसके ऊपर deposit होंगे. अच्छा, अब इसमें एक question जो आ सकता है वो ये कि solution is of blue color because of this copper, और ये copper further dissolve हो रहा है तो उसकी वजह से उसका जो blue color है ना वो maintain रहेगा. ठीक है, अगर ये graphite होता ना तो इसका blue color थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता because copper discharge होता जाता. But right now this one is also copper, this will dissolve, which means that overall the color will stay blue. Alright. When do electrodes react with the product of solution? Rule number 1 apply करें. Rule number 1 deals with electrodes. A reactive anode will dissolve. You have reactive anode, it will dissolve. ठीक है. दूसरा rule, less reactive ion discharges. आपने यहां पर देखना है मेरे पास ions कौन कौन से हैं. मेरे पास है H positive ion, copper ion. एक कॉपर आयन यहां पे है, एक कॉपर आयन यहां से आया है, कोई फर्क नहीं है दोनों कॉपर. द लेस रिएक्टिव विल डिस्चार्ज. दिस वन इज लेस रिएक्टिव, सो दिस वन विल मेक कॉपर. हाउ? गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. हाइड्रोजन वहीं पड़ा रहेगा एंड दैट इज व्हाट विल गेट. पिंक सॉलिड यहां पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, तो यहां पे एक पिंक लेयर आपको मिलेगी. ठीक है, इवेंचुअली दिस विल डिसॉल्व, अ पिंक लेयर विल बी फॉर्म्ड and the color will remain blue. Okay. Now, if impure copper dissolves, तो यहाँ पे बाकी क्या रहता है? Impurities. Impurities will stay here, and our assumption is that these impurities will not react. अच्छा, सैंडक में एक माइन है जहाँ से गोल्ड निकलता है, कॉपर निकलता है. अब कॉपर में गोल्ड मिक्स हुआ होता है, सिल्वर मिक्स हुआ होता है, तो जब उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो पहले सिल्वर आता है, पहले गोल्ड आता है, because they are less reactive, and then copper comes in. यहाँ पर we are assuming that we don't have any such impurity. Our impurities are more reactive than copper. Copper is the only one that is coming down. That's what we assume. What observations are made when adding aqueous ammonia to a solution? Again, इसके मैं बाद में आऊँगा. Blocks of magnesium are attached to underground pipes to made of iron to stop them rusting. Explain how it does that. Again, अभी हमने जिंक के बारे में क्वेश्चन किया. Same reasoning applies to magnesium. We'll say that magnesium is more reactive than iron, so it reacts. First, it loses electrons first and doesn't allow iron to do that. Simple. Magnesium chloride contains magnesium ion and chloride ion. Write the electronic configuration of magnesium ion. बहुत आसान है. Magnesium 282. कैसे पता चला? पीरियोडिक टेबल में देखेंगे 12 इलेक्ट्रॉन हैं. फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 2.
but this is iron, तो ये last two lost, so you're just left with 2 and 8. इसका सबसे आसान तरीका करने का क्या है, periodic table में जाएं, look for the nearest noble gas. मैग्नीशियम की nearest noble gas है नियॉन, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखें, क्योंकि मैग्नीशियम में जब आयन बनना है उसकी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन वाली हो जानी है. All elements try to be like noble gases, so whenever they will do this, they will dissolve and they will form this ion, which is similar to neon or noble gas. Assalamu Safi. Yeah, I know. I miss you too. Okay. Magnesium is produced by the electrolysis of molten magnesium chloride. This one is molten, which means there is no H positive. Just look at the ions. I'm going to have magnesium ion and chloride ion. Chloride is going to go on the positive, magnesium is going to go on the negative. So magnesium and chloride. Magnesium will form magnesium, chloride will form chlorine. How? This will gain electrons. Okay? This one needs electrons. This one loses electrons. And you balance them out. So ho gaya. That's how you get them. Okay? So I hope that's clear. So the idea is कि सबसे पहले आपने अपने आयंस को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपने देखना है नेगेटिव पे कौन सा जाएगा, पॉजिटिव पे कौन सा जाएगा. ठीक है, एग्जामिनर नेगेटिव और पॉजिटिव की वर्डिंग यूज करता है. दे डोंट यूज द वर्ड कैथोड एनोड, दे डोंट यूज दैट, बिकॉज कैथोड एनोड से हमें ये नहीं पता चल रहा कि अंडरलाइंग रीजन क्या है. व्हाई डज दिस गो टू नेगेटिव? बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव. ठीक है, इट्स वन ऑफ द बेसिक फैक्ट्स ऑफ नेचर. सिमिलरली ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पे जाएगा. ठीक है, उसको आप एनोड बोलो या उसको कुछ भी बोलो, उसने जाना तो अपने चार्ज की बेस पे है ना. एंड वंस यू आर डन, कट दिस आउट बिकॉज दिस इज योर रफ वर्किंग. जस्ट वन लाइन इज गुड इनफ. एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये चेक नहीं करनी. Aluminum is produced by the electrolysis of molten aluminum oxide. ठीक है. Describe the composition of electrolyte used in this electrolysis. अच्छा, अब composition of electrolytes इसका क्या मतलब है कि आपने क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज किए हैं. सो यू अंडरस्टैंड कि हमारे पास aluminum oxide होता है which comes from bauxite. So aluminum oxide. But it's not just itself, it is dissolved in cryolite. ऐसे ही है ना, it is dissolved in cryolite. तभी तो जाके वो रिएक्शन करता है, क्योंकि वैसे aluminum oxide it has a very high melting point. Cryolite dissolves it and cryolite lowers the melting point, and that is how we know. Liquid cryolite भी लिख सकते हैं, molten cryolite भी लिख सकते हैं, because it is acting as a solvent. Okay? Yeah. Name the material used for the electrodes. Graphite. Again, they have asked you to name it, so you cannot write the formula. C नहीं लिखना. Graphite. Construct equation for the reaction taking place. Again, you have to look at the ions. मेरे पास aluminum ion है, oxide ion है. So aluminum ion will go here. It will become aluminum. Simple. How? By gaining 3 electrons. I have oxide ion. It will become oxygen. How? By losing electrons. I need 2 of these. अब जरा balance करने में देखना. Each one has -2 and I have 2 of them, so -4. To cancel it out, I need 4 electrons. ठीक है? So they are lost. Of course, ये oxygen जो है ये further फिर react करेगी. High temperature होगा. You have graphite, oxygen, high temperature, perfect recipe to burn carbon. And that's what happens. Graphite burns, makes carbon dioxide, so you need to periodically replace it. हर थोड़ी देर बाद you have to find a new electrode to replace it. Okay, this question is asking you about state. इसमें उसने ये नहीं कहा कि describe, explain, नहीं. State का मतलब होता है कि just give a 1 or 2 word answer. No reasoning required. So this one is gonna be when concentrated aqueous sodium chloride. So सबसे पहले इसके ions लिख लेते हैं. H positive, OH negative from water, sodium के Na plus and Cl minus. अब जरा रूल याद करें. First rule,
reactive anode will dissolve. We don't have reactive anode, we have graphite. दूसरा rule, less reactive ion will discharge except concentrated halogen. अब जरा देखते हैं, पॉजिटिव में लेस रिएक्टिव कौन सा है? हाइड्रोजन, सो दैट विल डिस्चार्ज, सो कैथोड पर H पॉजिटिव आएगा. दूसरी साइड पे यू हैव लेस रिएक्टिव हाइड्रोक्साइड बट कॉन्सेंट्रेटेड हेलोजन विल डिस्चार्ज, सो ये डिस्चार्ज होगा, सो ये आएगा यहां पे. इतना सा याद करना है. एंड सो दिस विल मेक क्लोरीन, दिस विल मेक हाइड्रोजन. हाउ? दिस नीड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स and that needs to lose electrons, क्योंकि इसके पास नेगेटिव है, इसके पास भी नेगेटिव होना चाहिए. ठीक है? And that's how you get it. So there you go. Okay? Now what is left in the reaction vessel? Sodium hydroxide. So pH इसकी इंक्रीज करती है, alkaline solution बनता है, वो सारा कुछ है. Alright? Now this is the equation. अब ये इक्वेशन मैंने आपके समझने के लिए लिखी है. ऑफ कोर्स एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा है? एग्जामिनर ने तो सीधा सीधा बोला है कि मुझे स्टेट करके दो, तो आपने यहां लिख देना है प्रोडक्ट एट एनोड क्लोरीन एंड प्रोडक्ट एट कैथोड हाइड्रोजन. ओके, ऑफ कोर्स नाम ही लिखते हैं, लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए इक्वेशंस लिख रहा हूं. ओके, chlorine reacts with potassium iodide, the products are this, construct the ionic equation. ठीक है, अब जरा देखो, sorry, chlorine is Cl2 reacts with potassium iodide, okay, makes potassium chloride plus iodine. जरा ionic equation लिखते हैं. This will be positive ion, this will be negative ion, this will be positive, this will be negative. The negative ion is going to not change, to change, but potassium ion तो वही का वही है. So अब इसको बैलेंस कर लेते हैं and it is done. ये हमारी ionic equation है. State symbols if you want, they're all, this is gas, वो aqueous है, and that's how they. स्पेलिंग के मार्क्स आपके तब तक नहीं कटेंगे जब तक आप कोई डिफरेंट केमिकल नहीं बना देते. फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन है, मैं क्लोरीन की बजाय इसको क्लोराइड लिख दूँ तो दैट्स नॉट अ स्पेलिंग मिस्टेक, दैट्स अ क्लियरली डिफरेंट केमिकल टर्म. बट अगर मैं क्लोरीन के बजाय कोई और इस तरह की मिस्टेक कर दूँ कि N की जगह M लिख दूँ, K से लिख दूँ क्लोरीन, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. ओके, यस, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडाइड. ठीक है, दिस इज व्हाई इट इज डिस्प्लेसिंग इट. Explain why potassium chloride does not react with iodine. ठीक है, तो हम लिखेंगे कि iodine cannot displace chloride, या हम लिखेंगे chlorine is more reactive than iodine. ठीक है, so chlorine is more reactive than iodine. अच्छा, यहां पर ना एक और वर्ड भी यूज होता है, बिकॉज इफ यू लुक ओवर देयर, दिस इज अ redox reaction. तो हम ये भी कह सकते हैं कि देखें क्लोरीन ने क्या किया है, क्लोरीन ने आयोडाइड को ऑक्सीडाइज किया है. हेयर क्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है. सो वी कैन से दैट क्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन. यू कैन से दैट. ऑलराइट, सॉरी. कैन वी राइट बिलो लाइन्स? मतलब व्हाट यू मीन, यहाँ पे लिखना है आपने, लिख दो, लेकिन यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज गोइंग टू बी स्कैन्ड. तो अगर आप बहुत नीचे लिखोगे तो हो सकता है वो स्कैन ही ना हो. ऑलराइट, डिड्यूस द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एट द एनोड एंड कैथोड व्हेन concentrated aqueous magnesium bromide is used. Again, magnesium bromide है, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि कॉन्सेंट्रेटेड हेलोजन होगा तो वो डिस्चार्ज होगा. सो ज़रा आयन्स देख लेते हैं. मेरे पास H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, मैग्नीशियम आयन है, ब्रोमाइड आयन है. अगेन इनके चार्जेस मुझे सिवाय हाइड्रोक्साइड के ऑल ऑफ द अदर्स आई कैन फाइंड फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल. मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है तो पॉजिटिव 2 है, ब्रोमाइड ग्रुप 7 में है तो ब्रोमीन तो नेगेटिव 1 है.
नाउ द वन दैट इज लेस रिएक्टिव दैट विल डिस्चार्ज. सो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पर वी यूज द कॉन्सेंट्रेटेड हेलोजन वाला रूल दैट लेस रिएक्टिव आयन विल डिस्चार्ज एक्सेप्ट कॉन्सेंट्रेटेड हेलोजन विच इज ब्रोमाइड, सो दैट विल डिस्चार्ज. सो यहाँ पर वही इक्वेशन उसी तरह से हमने पहले लिखी थी, बट यहाँ पर एनोड पे आएगा ब्रोमीन और कैथोड पे आएगा हाइड्रोजन, और ये बाकी सब हमारा रफ वर्क है, तो ऐसे एक लाइन लगा देंगे. ओके, यू विल बी लेफ्ट विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ओके, chlorine reacts with aqueous magnesium bromide, sorry. The products are aqueous magnesium. Write the ionic equation. Again, do you notice कि magnesium ion जो है वो वैसे का वैसे ही है, शुरू में भी और बाद में भी. So that's not part of the ionic equation. Ionic equation talks about things that actually change in the reaction. So chlorine आएगी और chloride बन जाएगी, bromide होगा और bromine बन जाएगा. Now we balance it out. बन गया. And why is this happening? Because chlorine is a stronger oxidizing agent than bromine, or chlorine is more reactive than bromine. Okay, so we can talk about any one of these. So we'll say that chlorine is more reactive than bromine, or chlorine is a stronger oxidizing agent than bromine. ठीक है, so इससे हमें पता लग जाएगा. When they say that it is concentrated, यहाँ पर, that does not mean that you ignore water, because hydrogen is still coming from water, so you cannot ignore it. Okay. Ionic equation दोबारा बता देता हूँ. You have to understand कि word equation को देखो. Chlorine reacts with aqueous magnesium bromide. ये भी आयन है, ये भी आयन है, ये नहीं है. ठीक है. The products are aqueous magnesium chloride. ये दोनों आयन्स हैं, ये आयन नहीं है, तो ये ब्रोमीन है. अगर आयन होता तो ब्रोमाइड होता. अब जरा देखें, व्हाट इज स्टिल आयन बिफोर एंड आफ्टर मैग्नीशियम, तो इसको तो हमने लिखना ही नहीं आयनिक की इक्वेशन में. तो आयनिक की इक्वेशन में हमारे पास क्या आएगा? क्लोरीन, ब्रोमाइड, क्लोराइड, ब्रोमीन, बस. और हमने उनको लिख देना. ओके. सो या ऑफ कोर्स यू इग्नोर द स्पेक्टेटर आयन. मैं दोबारा से आपको ये इलेक्ट्रोलिसिस का समझा देता हूँ. 3 एग्जाम्पल्स कराता हूँ आपको, एंड देन विल गेट बैक टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस. आपसे सारे ही क्वेश्चंस हो जाया करेंगे. सो वी आर गोइंग टू डू 3 एग्जाम्पल्स, ऑल ऑफ देम विद ग्रेफाइट. मेरे पास पहले वाले में सोडियम क्लोराइड है लिक्विड, दूसरे वाले में डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड है एक्वस, तीसरे वाले में कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड है एक्वस. स्टेप 1, आयन्स देखें आपके पास कौन से. आई हैव सोडियम आयन, क्लोराइड आयन. Here I have sodium ion, chloride ion, but because of this aqueous part, I have H positive and OH minus. ठीक है. अच्छा, अब इधर देखते हैं. सोडियम आयन, chloride ion, H positive, OH minus. Yes, Alize, I agree with you. Now you look at the anode. Step 1, क्या एनोड डिसॉल्व करेगा? नहीं करेगा. You have graphite. It will not dissolve. अगर होता ना कॉपर डिसॉल्व हो जाता, उसके भी आयन्स आ जाते, तो वो नहीं होगा यहाँ पे. तो अब एनोड पे क्या होगा? एनोड पर क्लोराइड विल कम एंड मेक क्लोरीन. कैसे? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. यहां पर क्या होगा? एनोड का रूल क्या है? लेस रिएक्टिव आयन डिस्चार्जेस एक्सेप्ट कॉन्सेंट्रेटेड हेलोजन. लेस रिएक्टिव इन दोनों में से कौन सा है? हाइड्रोक्साइड. इट विल डिस्चार्ज. सो इससे बनेगा hydroxide, 4 hydroxide make 1 oxygen, 2 water, 4 electrons. दोबारा से रूल सुना. Less reactive ion will discharge except concentrated halide. So यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्साइड है, क्लोराइड है और कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये डिस्चार्ज होगा. सो यहाँ पर क्लोराइड changes to chlorine plus 2 electrons and there you go. अब कैथोड को देखते हैं. कैथोड पर
बहुत सिंपल सा है, लेस रिएक्टिव विल डिस्चार्ज. ओके, सो सोडियम विल डिस्चार्ज, मेक सोडियम by gaining electron. What's wrong with me? Here again less reactive will discharge, so वो hydrogen ion है. Hydrogen ion will gain electron, make hydrogen gas. Okay, and last one again यहाँ पर less reactive आएगा hydrogen, so hydrogen ion plus electron makes hydrogen. ये molten है, ये दोनों एक्वस हैं, बस कॉन्सेंट्रेटेड में फ़र्क ये है, जब भी डाइल्यूट होगा तो OH होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा तो हेलोजन होगा. ये सिंपल सी बात है. अगर कॉन्सेंट्रेट में हेलोजन ना हो तो फिर भी OH ही होगा, फिर क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, दो और केसेस करवाता हूँ ताकि आपको कोई कसर अगर रह भी गई है तो यू नाउ नो इट. एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज कॉपर इलेक्ट्रोड्स. एक ग्रेफाइट के साथ करते हैं, एक कॉपर के साथ करते हैं. इन बोथ केसेस आई हैव कॉपर सल्फेट aqueous in dilute. ठीक है, सो डाइल्यूट कॉपर सल्फेट इन बोथ ऑफ देम. ठीक है, अब देखते हैं अब हमारे पास आयंस कौन कौन से होंगे. वी हैव कॉपर आयन, वी हैव सल्फेट आयन, वी हैव हाइड्रोजन आयन, वी हैव हाइड्रोक्साइड आयन. एंड इट्स द सेम फॉर बोथ ऑफ देम. दोनों के केस में ऐसे ही होगा. ठीक है, सो ये यहां भी आ गया. Now what will happen at the anode, and that is the most important part, so please pay attention. First rule was for anode. A reactive anode will dissolve and form ions. We have graphite, reactive anode nahi hai, it will not dissolve. So what will happen, anode पर वही second rule apply होगा, less reactive will discharge, hydroxide will discharge. मैंने आपको कहा है dilute में hydroxide है, आंखें बंद करके करें. So OH minus will make 1 oxygen, 2 water, 4 electrons. ठीक है, अब जरा इस साइड पे आ जाते हैं. What happens here? Do you have reactive anode? Yes, you have copper anode. So it will dissolve. Okay, so copper will dissolve and make copper ions. कैसे? Losing 2 electrons. So there you go, copper has dissolved. Anode पे अब कुछ नहीं होगा, ये दोनों ions ऐसे ही रहेंगे. Anode is not going to react. And what happens at the cathode? Let's see. Cathode पर वही है, less reactive will discharge, less reactive is copper, it will discharge. So copper ion will come here, gain electrons, make copper metal. Pink solid will deposit. ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर हमारे पास दो तरह के कॉपर आयंस हैं. वन इज दिस वन, वन इज दिस वन. बट फर्क उनमें क्या है? द डिफरेंस इज सिंपल. वन ऑफ देम इज कमिंग फ्रॉम द व्हाट यू कॉल द सॉल्यूशन एंड द अदर वन इज कमिंग फ्रॉम द electrode. In this one you're getting it from the electrode, in this one you're not. Okay, so क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, इक्वेशन वही होगी. Less reactive is going to discharge, which is copper, it will take electrons, it will make copper metal. फर्क क्या? Here you will run out of copper eventually. Here the copper from the solution will not run out. क्यों? क्योंकि जितना कॉपर सोल्यूशन में से यूज अप हो रहा है उतना ही वापस एनोड से आ भी तो रहा है. सो द डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन इज दैट सोल्यूशन कलर फेड्स एंड हियर सोल्यूशन remains blue. That is the key difference in both of these. Here, because you have graphite which is not dissolving, which is not forming ions, the copper from the solution will discharge. So solution में copper ion था, अब नहीं है. Here copper from solution is still discharging, but anode is providing more copper.
तो जो यूज अप हो रहा है वही रिप्लेस भी हो रहा है, रिप्लेनिश भी हो रहा है. सो यू आर नॉट गोइंग टू रन आउट ऑफ कॉपर अनटिल ऑब्वियसली एनोड सारे के सारा डिसॉल्व हो जाए. और दैट्स इट. दोज आर ऑल द टफ क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. अब जरा हम क्वेश्चंस पे वापस जाते हैं. एनी क्वेश्चंस पूछ लें अगर कोई सवाल है तो. ऑलराइट, लेट्स गो बैक टू दिस. Aluminum is extracted by electrolysis of aluminum dissolved in molten cryolite. Write the electrode equation for the formation of aluminum. Again, aluminum ions hain. They're going to gain electrons, make aluminum. Electrode equation for formation of oxygen. Oxide ions are going to make oxygen by losing 4 electrons. ये भी हमने किया है, ठीक है? You can easily balance this out. Aqueous copper sulfate is electrolyzed using graphite electrodes. So two important things here. It is copper to sulfate and graphite, which means graphite is not going to dissolve. What ions do I have? I have H positive, OH negative, Cu2 plus, SO4 2 minus, and less reactive will discharge. So copper ion will discharge and hydroxide ion will discharge. Okay, so what happens? What is observed उसने पूछा है. At the positive electrode. Positive electrode पे आना है हाइड्रोक्साइड है. It will form oxygen. Oxygen क्या है? Colorless bubbles हैं उसके. And that is what we will see. Okay, so colorless bubbles. So we'll see that bubbles of colorless gas. अगर हमने bubbles नहीं लिखते हैं, effervescence लिख दो, fizzing लिख दो. There's this idea कि effervescence सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लिखते हैं. नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है. You can write it for any other gas. At the negative electrode, you're going to see a pink solid because copper metal form हो रहा है. And in the electrolyte, blue color fades. Why? Because the blue color was because of presence of copper ions. You're running out of them. You don't have copper ions anymore. And because you don't have copper ions anymore, they are not going to basically react. Okay, they're not going to be there. See? All right. Graphite conducts electricity. Give another reason why they're used in electrolysis. They're cheap. They are more reactive than copper. Okay, and all of those are good reasons for you to use them. Okay, and most importantly, why we use them is that they don't react themselves. They are unreactive. So them being cheap, them being them having layers, those are all physical reasons. Chemical reason हमारे पास यही है that it is unreactive. Aqueous copper sulfate reacts with magnesium, construct the ionic equation. Again, let's look at the ions. Sulfate ion इधर भी है, sulfate ion इधर भी है, ये नहीं होगा. अब जरा charges को देखें. ये positive 2 है, ये पॉजिटिव 2 है, ये दोनों 0 है. सो हमारी आयनिक इक्वेशन होगी कॉपर 2 प्लस प्लस मैग्नीशियम मेक्स कॉपर प्लस मैग्नीशियम आयन. यू कैन क्लियरली सी दैट मैग्नीशियम is giving electrons to copper. Copper ion is taking electrons and making copper. This is a redox reaction. अच्छा, यहाँ पे भी पे अटेंशन, गौर से सुने, गौर से. redox का एक शॉर्टकट बताने लगा. If an equation has an element, it is confirmed redox reaction. Element है, confirmed redox है. तो यहां पर ये एलिमेंट है ना, ये redox reaction है. और ये अब एलिमेंट नहीं रहा, it has lost electrons. तो ये क्या है? This is your reducing agent. And copper ions in your oxidizing agent because it has taken electrons. This is oxidizing agent. Okay, so it's pretty clear, just like that. Why am I leaving copper and magnesium in the equation? Because magnesium is an element just by itself, copper is an element just by itself. Charges तो इनके ऊपर होंगे ना, ये तो neutral होंगे. That's why. What's your question? Can we write the resulting electrolyte becomes acidic? In this question I'm assuming आप पूछ रहे हो कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या है. अब जरा क्वेश्चन को गौर से देखना. Describe
what is observed. Something becoming acidic is, you cannot test it without checking. आप बता ही नहीं सकते हो कि वो एसिडिक हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको pH चेक करनी पड़ेगी. What pH चेक करना is a test, it's not an observation. So observation is something that you just see. In very rare cases you smell, ठीक है, you sense. So this is not observation. All right. I don't understand your question. Why is copper and magnesium added? I don't understand that question. Explain कर देना. Explain why aluminum is extracted by electrolysis and not reduction with carbon. भाई carbon उसको कर ही नहीं सकता reduce. Carbon is less reactive. Carbon is less reactive than aluminum. The electrolyte is a mixture of aluminum oxide and cryolite. Why is cryolite added? Two main reasons. One is it dissolves aluminum oxide, and second, it lowers the melting point by acting as an impurity. Okay? So these two reasons are why we do it. At the positive electrode, oxide ions are converted to oxygen. Write the equation. So you have oxide ions, you have oxygen. Obviously they lose electrons. कितने? दो हैं. So you have 4 negative, so you need 4 electrons. Okay? The electrolysis of molten sodium chloride is carried out using graphite electrodes. State the meaning of the term electrolysis. It is decomposition of electrolyte. A electrolyte can be an ionic compound, it can be a solution using electricity. That's it. That's what it is. Definitions कोशिश करें वो आप याद रख लें, या उनमें एटलीस्ट जो कीवर्ड्स हैं वो याद रख लें. सो यहाँ पर दिस इज द वन दैट वी हैव. ओके, या you just need to remember the reactivity series to figure out what is more reactive and what is less reactive, and it's pretty straightforward. बहुत simple सी है, you just memorize that one. Okay. State the direction of movement of both the positive and negative ions when molten sodium chloride is electrolyzed. अच्छा, अब यहाँ पर you have to understand कि उसने आपसे ये नहीं कहा कि पॉजिटिव आयन कैथोड पे जाता है या एनोड पे जाता है, और आपने भी वो नहीं लिखना, बिकॉज कैथोड एंड एनोड डू नॉट टेल मी कि वो क्यों जाता है, उसके पीछे रीजनिंग क्या है. The reason it travels is because the positive and negative ions are attracted to each other. So positive ions go to the negative electrode and negative ions go to the positive electrode. इतना आसान सवाल है. Do not overcomplicate it. Do not overthink, please. ठीक है, बहुत simple सा आंसर है इसका. State one observation that can be made at the positive electrode when molten sodium chloride is electrolyzed. What is happening here? You have a positive electrolyzed and you have sodium ion and chloride ion. Of course it's the chloride ion that's going to go there. And what will it make? Chlorine. And what's the observation for chlorine? Green fumes. That is it. Okay? Because you have chlorine gas being made. Give the formula of two negative ions present in aqueous sodium chloride. Aqueous है तो एक OH minus होएगा and chloride. That's the second one. Pretty straightforward. But remember to give the formula, not the name. Formula. Okay. When aqueous sodium chloride is electrolyzed, hydrogen is produced at the negative electrode. Why? Because you have dilute solution. अगर constant, sorry, wait a minute. Hydrogen तो आनी है. Sodium is more reactive than that. Explain in terms of electrons why hydrogen and not sodium is produced at the negative electrode. So understand what's happening here. You start with hydrogen ion, sodium ion.
दीज आर द टू, इन्हीं में से किसी ने नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाना है, ये जाएगा, लेस रिएक्टिव है, और जाके क्या करेगा, इट विल फॉर्म न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस, which means right now it has positive charge, it needs one electron to be neutral. So we'll say that hydrogen ions gain an electron each. ठीक है, और क्यों? Because it is less reactive than सोडियम आयन. ठीक है, अच्छा, अब प्रॉब्लम इज कि ये क्वेश्चन में अगर आप रिएक्टिविटी की बात कर देते हो, यू हैवंट रियली आंसर द क्वेश्चन, बिकॉज द क्वेश्चन वाज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिएक्टिविटी की बात नहीं करनी. तो अब इसको कैसे हम बताएं? तो इट्स रियली सिंपल, जस्ट पे अटेंशन. दोनों ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन गेन करना है. यही जो लेस रिएक्टिव वाली बात है ना, इसको आप गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में वो कर दो. सो विल सिंपली से दैट हाइड्रोजन गेन्स एन इलेक्ट्रॉन ईच मोर इजीली देन सोडियम आयन, और आंसर हो गया. Saying something is more reactive is the same as it does something more easily. It does something by using less energy. दोनों बातें, तीनों बातें एक ही हैं. More reactive, takes less energy, does more easily. So जब उसने बोला that you have to explain in terms of electrons, you cannot say it is more reactive, less reactive. But you can say what is more easier, what is difficult, what makes more energy, what takes less energy. And that's all. That's all you have to mention. Okay? So I hope ये एक important question था. Alright? Then Abdullah's question is that what do you mean by each? Thing is, जितने भी हाइड्रोजन आयंस होंगे सभी ने एक इलेक्ट्रॉन लेना है. ठीक है? So that's what we'll say. We will not mention reactivity here. That is super important because उसने specify कर दिया. In terms of this, whenever question says कि आपने इस तरह बताना है आंसर, आपने उसके अलावा कुछ भी बताया, आप चाहे वो ठीक भी हुआ, you will not get credit. So हमें क्या ज़रूरत है अपने marks lose करने की? We know how to answer a question and we will use the instruction given. And that is why जो आजकल हम पास सेशन कर रहे हैं या जो अभी हम पढ़ रहे हैं, the whole point is to understand how to attempt papers. और इन्हीं पेपर्स को, इन्हीं क्वेश्चंस को देख के आपको समझ आती है कि एग्जामिनर आपसे मांगता क्या है, उसको एक्सपेक्ट क्या कर रहा है वो आपसे. ऑलराइट, क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी इयर्स ऑफ पास्ट पेपर आई शुड डू टू स्कोर एन ए. ऑनेस्टली आई डोंट नो. आई ऑनेस्टली डोंट नो. व्हेन आई वाज इन ओ लेवल्स आई हैड अ फ्रेंड, ए लेवल्स बल्कि आई हैड अ फ्रेंड, उसने 1985 से 2010 तक के सारे पेपर्स किए थे. मैंने 2002 से 2010 का पेपर किए थे. हम दोनों का ये आ गया था. तो इट ऑल कम्स डाउन टू व्हाट यू आर सेटिस्फाइड विथ. दैट्स ऑल दैट मैटर्स. सो आपको अगर लगता है कि अभी भी कुछ टॉपिक हैं जिसको आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है, तो अभी भी आप टॉपिकल करें, past papers करें. and right now you should be doing one past paper every day, at least for the subjects that are more technical like sciences, maths, add maths. इनका डेली एक पेपर करना ज़रूरी है. ठीक है? बट जो आपके सारे पिछले हैं, मतलब टॉपिकल्स हैं, अगर वो आपको आते हैं और आप पास पेपर्स कर रहे हो और आपने 5 साल के पेपर्स किए और आपसे हो गए, बस ठीक है, यूर गुड टू गो. कैम्ब्रिज रिकमेंड्स कि आप 3 साल के पेपर्स करो, उससे पुराने तो वो पेपर्स देते ही नहीं है. ठीक है? आई टीच स्टूडेंट्स इन यूके, उनको तो 3 साल से पुराने पेपर मिलते ही नहीं है. ये तो हमारा मुल्क है कि हमें पेपर्स जितने मर्जी पुराने सालों के आप ले लो. एडमेट्स में मैं वर्कशीट्स बनाता हूँ तो 1940s के पेपर्स भी अवेलेबल हैं. ठीक है? बुक्स हैं जिनके अंदर वो पेपर्स हैं, आप उनसे क्वेश्चंस कर लो. सो इट ऑल कम्स डाउन टू व्हाट यू आर मोर कंफर्टेबल विद, जहाँ आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है
तब तक के पेपर्स करो. Alright, coming back to the question. The reaction shown also represents the overall process that occurs within a hydrogen oxygen fuel cell. Okay. फ्यूल सेल में क्या होता है? फ्यूल सेल में हमारे पास बिल्कुल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का ऑपोजिट होता है. होता क्या है कि हमारे पास इस तरह का फ्यूल सेल है, एक साइड से हाइड्रोजन गैस आएगी, एक साइड से ऑक्सीजन गैस आएगी. अब दोनों यहाँ पर होते हैं ग्रेफाइट, वो उनको ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है. और जैसे ही उनको ऑब्जॉर्ब करता है, यहाँ पे हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है. वो कुछ भी हो सकता है, वो एल्कलाइन सोल्यूशन हो सकता है, वो ठीक है, सम इलेक्ट्रोलाइट. अब क्या होगा, हम यहां से इसको वोल्ट मीटर लगा लेते हैं, सेल है ना. अब सबसे पहले ऑक्सीजन आएगा, हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा, ठीक है. हाइड्रोजन गैस आएगा, हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होगा, एंड दे विल रिएक्ट टुगेदर और गिव वाटर आउट. इसकी इंटरनल वर्किंग जो है ना, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. क्या मतलब क्या होता है, कहाँ से आता है, सोल्यूशन में एल्कली हो तो क्या होता है, सोल्यूशन में एसिड हो तो क्या होता है, दैट इज ऑल नॉट रिक्वायर्ड. बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास फ्यूल सेल में इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इससे हम, वाटर इज द ओनली केमिकल प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस इज अ वेरी यूजफुल, इट इज़ वेरी क्लीन, क्योंकि इसमें से वाटर प्रोड्यूस करते हैं आप. इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो आपको आने चाहिए, स्पेशली कंपेयर टू जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके लिहाज से. इसके अलावा जो इसकी डिटेल वर्किंग है बिल्कुल नहीं आपको रिक्वायर्ड, ठीक है. सो बी वेरी क्लियर अबाउट दैट. ऑलराइट, सो यहाँ पर इक्वेशन क्या है कि हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन आयंस बनाने हैं ऑब्वियसली, सो 2H पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन ने वाटर बनाना है, ठीक है. और दैट इज़ हाउ वी आर एबल टू गेट इट. बस बैलेंस करना है, हो गया. सो अब देखो ना, आपको लगेगा कि ये तो मेरे सिलेबस में नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसने पूछा है कि आपने केमिकल प्रोडक्ट बनाना है, तो वो तो वाटर ही है, उसके अलावा कोई केमिकल प्रोडक्ट है नहीं. डिस्क्राइब वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल टू पावर अ व्हीकल अदर देन बर्निंग गैसोलीन. सो एक तो ये कि नो इमिशंस, नो कार्बन इमिशंस या नो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस, सिर्फ वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है. सेकेंडली, व्हेन यू डू कंबशन तो बहुत सी एनर्जी ज़ाया हो जाती है. इसमें ऑल द एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ वेरी एफिशिएंट. एनर्जी लॉस बहुत कम है इसके अंदर, सो इट्स मोर एफिशिएंट देन दैट. ओके, सो दैट्स अनदर एडवांटेज ऑफ दिस वन. इट इज़ नॉट मोर एनर्जी, इट इज़ मोर एनर्जी ऑफ एफिशिएंट. ये नहीं है कि आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को वैसे बर्न करो तो एनर्जी कम मिलेगी और इस तरह ज़्यादा मिलेगी, सेम एनर्जी मिलेगी. इट्स द सेम डेल्टा एच. एंथैल्पी चेंज तो वही रहती है ना एक रिएक्शन की, इट्स जस्ट दैट इट गिव्स मोर एनर्जी एफिशिएंसी, लॉस नहीं है. ओके, सिल्वर नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. द प्रोडक्ट्स आर सिल्वर एंड ऑक्सीजन. ओके, silver ions are reduced at the cathode to make silver atoms. Okay, construct the ionic equation. So you have silver ions, they're making silver, obviously by gaining electrons, and that's it. Hydroxide ions are oxidized at anode to make oxygen molecule. Hydroxide की equation हमें याद है, it will make 1 oxygen, 2 water, 4 electrons. Explain why solid silver nitrate cannot be electrolyzed. भाई वो बिजली कंडक्ट नहीं करेगा, it has no free ions, so cannot conduct electricity. We had to give a reason because the question said explain, so be very careful. If the question asks you for this, you answer with the reason. Explain का मतलब ये give a reason. Okay, I'm skipping this question because this isn't the topic we're working right now. Explain why solid iodide cannot be electrolyzed. वही question दोबारा आ गया, ठीक है, same answer. Ions are not free, ions are not mobile, वो सारा हम लिख देंगे. When dilute sodium hydroxide is electrolyzed, hydroxides are converted to oxygen and water. So again, this is same 4OH minus makes 1 oxygen, 2 water, 4 electrons. The first stage in the test for nitrate, ये भी हम छोड़ हैं अभी.
Aluminum is manufactured by electrolysis of aluminum oxide dissolved in. Acha, by the way, in this question, if somebody said electrons, really sad, because this is an ionic compound, it cannot have free electrons. Free electrons सिर्फ solid में बिजली कनेक्ट करते हैं. वो alloy हो सकता है, वो metal हो सकता है, या वो graphite हो सकता है. ठीक है? Only 3 cases. Whenever you have solution or any liquid or a gas, you need ions, and those ions are free to move around, and they will. If you mention electrons here, you will not get credit. I'm really sorry. Okay. Aluminum is manufactured by electrolysis of this. हाँ ठीक है, आसान है. ये तो हमने 3 दफ़ा कर लिया अभी तक. Write ionic equation for cathode. Cathode पर जाएगा cation, anode पर जाएगा anion, oxygen plus 4 electrons, aluminum plus 3 electrons make aluminum. Okay. One of the stages in extraction of zinc involves electrolysis. At the cathode, zinc are changed to zinc atoms. ठीक है? कर लेते हैं. Cathode पर zinc ions will take electrons, make zinc. Hydroxide ions will lose electrons. So 1, 2, 4. 1 oxygen, 2 water, 4 electrons. Yeah, that's actually a common mistake. Students usually write ions की जगह electrons लिख देते हैं. और दुख की बात है. मतलब ऐसे नंबर नहीं ज़ाया करने चाहिए. Explain why molten magnesium chloride conducts electricity. Again, it has mobile. क्या लफ्ज़ है? Yeah, ions. Question is, how do we know about observations, color change, increase of mass or not? Fact sheet. Just go to the fact sheet. पूरे syllabus के लिए IGCSE, O levels, MYP, all of the things you need to know, you need to memorize, all of this उसमें है. Go to the fact sheet. फैक्ट शीट सर्च करें, आपको मिल जाएगी. ठीक है? मेरे चैनल पे 1-2 वीडियोस के लिंक भी है, मैं लिंक यहाँ पे भी ऐड कर दूंगा. यू कैन गो देयर. और रैपिड रिविजन ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी. प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एट द एनोड एंड कैथोड व्हेन मोल्टन, मतलब वाटर नहीं है, मैग्नीशियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड. सो मैग्नीशियम एट द कैथोड एंड क्लोरीन एट द एनोड. दैट्स व्हाट यू विल गेट. और Cl2 लिखना है, Cl नहीं लिखना, because Cl2 is made. Dilute HCl is electrolyzed. Dilute है तो हाइड्रोक्साइड will discharge. बट उसने कैथोड के लिए मांगा है, तो कैथोड पे तो H पॉजिटिव ही आना है. H पॉजिटिव will take electron, make hydrogen gas. बैलेंस कर लेंगे. So there you go, it's balanced. अगेन प्लीज़ यहाँ पर Cl2 लिखना है, Cl नहीं लिखना है. बाकी हाँ नाम लिख दो, क्लोरीन लिख सकते हैं, मैग्नीशियम लिख सकते हैं, दैट्स ऑल राइट. Zinc is used to prevent iron from rusting. State the essential conditions needed for rusting. You need moisture or water, oxygen. ठीक है? And of course iron होगा तो वो rust कर जाएगा. ठीक है? So that's what you need. You need moisture, you need oxygen, and that will obviously rust. Okay. Explain how zinc prevents iron from rusting by methods of sacrificial protection. So, zinc sacrifices its own life. Zinc is more reactive. So, more reactive than iron. So, it loses electrons before iron. Yeah, it corrodes before iron. ठीक है? Loses electrons before iron. ठीक है? Molten zinc chloride conducts electricity. Predict the products formed at anode.
जिंक क्लोराइड है तो एनोड पर बनेगा क्लोरीन एंड कैथोड पे बनेगा जिंक. कॉपर इज प्योरिफाइड, ठीक है. इम्प्योर कॉपर एनोड, प्योर कॉपर कैथोड. इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है. कैथोड पर क्या होगा? कॉपर आयन आएगा, विल टेक इलेक्ट्रॉन्स, मेक कॉपर मेटल. दैट्स ऑल. A metal object can be electroplated with another metal. State one use of electroplating. Corrosion से बचाने के लिए, इसको खूबसूरत बनाने के लिए. So we can say that jewelry में, ठीक है, to make it more embellishment, make something more resistant to corrosion, ठीक है, make something हार्डर ऑन द सरफेस आई थिंक, क्योंकि उसकी लेयर होती है, उसकी मैलिबिलिटी और है, मेटल की मैलिबिलिटी और है, वो थोड़ा सख्त हो जाता है. सो ऑल ऑफ दीज विल वर्क. एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वर्कशीट. एनी क्वेश्चंस? जब क्लोरीन के मोल्स निकालने हैं उसका एमआर को x2 करेंगे बिकॉज इट्स डायटोमिक. डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट. मतलब उसने अगर क्लोरीन के मोल्स आपसे कहे हैं और आपने इंपेरिकल फार्मूला यूज़ करना है तो इंपेरिकल फार्मूला निकालते हुए तो आप ए आर से डिवाइड करेंगे. बट अगर किसी और सिचुएशन में, सो येस यू विल डू एम आर, ठीक है. नेक्स्ट वर्कशीट रिवर्सल रिएक्शन. डन. कल रिवर्सल रिएक्शन की इक्विलिब्रिया की वर्कशीट कर लेते हैं. जस्ट रिवाइज इक्विलिब्रिया वाला चैप्टर एंड वी विल डू दैट. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चंस? When we say more reactive, shouldn't we assume that it reacts more easily rather than less reactive? Of course, you can say that something that's more reactive reacts more easily, takes less energy. Yes, you can say that. Yes, definitely. All right. So I'll share the link to this worksheet in the description. If you need it, आप उसको देख लीजिएगा. And yeah, thank you for watching. Again, subscribe करें, like करें दोस्तों. क्या होता है वो? I should memorize that dialogue. And अपने दोस्तों को ज़रूर invite करें. I hope that I can help you out and help them out as well. Alright. So thank you so much. Inshallah. See you tomorrow, same time, and we will do reverse will. Okay. Allah Hafiz.